Hey guys, welcome back to another video, another episode of Kabhi Khatti Kabhi Meethi with Aditi. After the last video, I got an amazing response despite my comments were off on my YouTube video. I got a lot of DMs and I got a lot of suggestions for the next video. So in this video, I'm going to talk about my entire dental journey in college, how my college life was, and what did I learn from college and everything else. So let's get into the video. Okay, so in this video particularly I'll be talking about my entire college first year. So my first year started on 1st of August. So basically I got admission in the first counseling only. College 1st August को उन लोगों के लिए start था जिनको first counseling में admission मिल गया था. Later I think a lot of students joined after 15-20 days of the counseling also, because there were students who had opted for another round of counseling. There were students who were exploring also. There were a lot of students, so they joined after 20 days also. So the college started. So initially the first few days were very confusing. A lot of teachers, they used to just ask us कि तुम क्यों आए हो, MBBS छोड़ के आए हो या तुमको BDS करना था. And that question like really triggered a lot of students in my class, because of course MBBS is a dream for all, and there were very few people in the class who were genuinely interested in dentistry. So the first few weeks it went in exploring, and it went in knowing the subjects, and it went in knowing the hostel and the friends and the type of students we were interacting with. But the entire this first month was more about कि हम किसके साथ ज़्यादा क्लोज हैं, कहाँ घूमना है, मुंबई घूमना है. तो it was not about college, it was more about Bombay. So I think in the first month me and my friends, हम लोग literally हर जगह गए. We went to Bandra, we went to Marines, we went to a lot of places जो पास में they were like main attraction of Bombay. तो हम वहाँ पे घूमे, and उसके बाद next month से the college actually started. So we had like 6 subjects in the first year. So it was general anatomy and dental anatomy, one subject, both the subjects combining one subject. Physiology and biochem, both these subjects combining one subject again. मतलब one इनका एक पेपर होता था जिसमें एक सेक्शन फिजियो, एक सेक्शन बायो का, बायोकेम का. And then we had this also, what, DADH, dental anatomy and dental histology. No, we had general anatomy, one single subject, physio biochem and DADH as one subject. मतलब GA और general anatomy and general histology. Oh god, wait, okay, I got it. General anatomy, general histology, dental anatomy, dental histology, and physio and biochem. Yeah, right. So sorry for this confusion. तो ये 3 subjects थे, total 6 subjects to study. And the first year was, क्योंकि we were so excited, I didn't study, and I was not even interested in making the carvings and all. So talking about dental subjects, that was DADH. I was more interested in making the histo diagrams and all. HNE से मुझे बहुत प्यार था. I used to make it in my rough journal also, fair journal also. I used to make it for my friends also. But DA I never liked. I never liked the carving part also, and it wasn't a big deal. I asked my friends to do my carving. थोड़ा बहुत तो इतना तो हो जाता था कि एग्ज़ाम में मेरा बन जाता था, बट मैं कभी बनाई नहीं हूँ वो. तो DA तो ऐसे ही गया. DH was मतलब मुझे काफ़ी पसंद था, and GH was okayish for me, because we studied from the questionnaire that was given to us, and a lot of things which came in our university paper were really out of the box only. So overall GA was not my favorite, but I did study each and everything very nicely. In the end, I only followed my questionnaire and I only followed my previous 10 years paper, nothing else. मैंने एक चीज़ extra नहीं की है उसमें. Coming to physio biochem, I loved physio more, and biochem was a, वो होता है ना कि पढ़ना पड़ता है, and I always preferred keeping physio as my मतलब प्रायोरिटी, बिकॉज अगर फिजियो में ज़्यादा स्कोर हुआ, बायोकेम में कम स्कोर हुआ, देन ऑल्सो आई विल पास, एंड मतलब बैलेंस भी हुआ, देन ऑल्सो आई विल पास. सो इट वॉज मोर अबाउट पासिंग इन द फर्स्ट ईयर.
So this is how I studied. I don't really remember what I did in first year completely, but yes, I did get the books. I did got the QRS. If you guys are in first year, please go with the QRS and do not stick to books, because फर्स्ट ईयर में आपको पता ही नहीं होता है कैसे पढ़ना है, क्या करना है. बाय द टाइम यू फिगर आउट इट्स ऑलरेडी वेरी लेट. एंड ट्रस्ट मी, जो नॉलेज आपको चाहिए और जो नॉलेज आपको थ्योरी पेपर में पूछेंगे दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. एंड जो नॉलेज आपकी प्रैक्टिकल्स में टेस्ट करेंगे दैट इज़ तो डिफरेंट ओनली. सो इफ़ यू आर अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, आप अगर अभी फर्स्ट ईयर में आए हो एंड यू आर फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू नो वॉट योर सब्जेक्ट्स आर एंड एवरीथिंग, प्लीज़ stick to your own college की previous 10 years paper and the question bank that your college will give you or your college seniors will give you for sure. तो please stick to that. एंड जो भी एक्स्ट्रा स्टडी है वो आप सेकेंड ईयर से भी कर सकते हो, बिकॉज बाय द टाइम यू कम टू सेकेंड ईयर यू विल एक्चुअली फिगर आउट कि कैसे पढ़ते, क्या पढ़ते, कब पढ़ते हैं. ओके, so this is how my first year went. So I remember very distinctively that my first year anatomy paper was the worst paper. Diptika ma'am was the head of the department back then, so I went to her and I told her, ma'am, I don't know if I'm passing this exam, because all the questions which came as a 10 marker were actually 5 marker क्वेश्चंस फॉर अस. मतलब जो हमको क्वेश्चन बैंक दिया हुआ था उसमें देयर वाज अ लिस्ट ऑफ 10 मार्कर क्वेश्चंस एंड 5 मार्कर क्वेश्चंस. सो जो 5 मार्कर क्वेश्चंस थे वो 10 मार्क्स में आए थे. तो आई वाज रियली वरीड. मतलब ऑल्दो आई एम अ वेरी गुड पर्सन व्हेन इट कम्स टू राइटिंग द आंसर्स. आई कैन मेक स्टोरीज. मतलब मैं तो CBSE में थी तो मैंने वही किया है. स्टोरीज लिख सकती हूँ मैं, अच्छे से आंसर लिख सकती हूँ. आई नो हाउ टू एक्सप्लेन, आई नो हाउ टू मेक डायग्राम्स. एंड द बेस्ट थिंग दैट आई कैन डू इज़ दैट व्हेन आई लुक एट समथिंग, मतलब अगर मुझे वो पिक्चर देख के याद हो जाएगा ना, देन आई कैन मेक डायग्राम्स. आई कैन मेक एज मैनी डायग्राम्स एज आई कैन. मतलब मेरा वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. तो वो मैंने अच्छे से कर लिया था. आई रोट अ 10 मार्कर आंसर एज अ 5 मार्कर आंसर ओनली, बट मैंने डायग्राम्स ड्रॉ किए थे. एंड आई थिंक दैट वॉज द रीज़न वाई आई पास्ड फर्स्ट ईयर. एंड आई जस्ट I got 63%. 65% पे फर्स्ट क्लास होता है. I got 63%, and that also I got because I scored less in my practicals. So this is a pro tip for all of you who are in first year right now, that if you like really work on your theory, you have to work on your practical as well. I did study for my theory, but I think I lost my marks in my practicals because I took practicals very lightly, because a lot of my seniors told me, अरे ये तो college का है, college has to pass us and this and that. तो I took my practicals lightly, जिसमें I didn't study well. कितना कुछ इज़ डिपेंडेंट ऑन योर वाइवा, कितना कुछ इज़ डिपेंडेंट ऑन द स्पॉटिंग में तो यू कैन ऐसे ग्रैब मार्क्स, मतलब वो तो आपके फ्री के मार्क्स हैं. बट कमिंग टू वाइवा एंड कमिंग टू थ्योरी एंड लाइक practical both viva, you really have to study, and the questions they ask is completely different from what you study in your theory exam. It totally depends on how the external is, where the external is coming from. इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है. लाइक आई रिमेंबर मेरा DADH का जो प्रैक्टिकल था वो पहला था, एंड हमारी जो क्लास में बोर्ड था ना, मतलब द एक्सटर्नल केम एंड शी जस्ट केम एंड सैट इन द DA लैब. शी डिडंट इवन ऐसे गेव अस टाइम टू कॉन्टेम्पलेट कि वो एक्सटर्नल है या कुछ है. तो द टीचर्स ऑल्सो केम एंड बोर्ड पे लिखा हुआ था 3rd मोलर, एंड वी वर टोल्ड कि कैनाइन आ सकता है, प्रीमोलर आ सकता है, इंसाइजर आ सकता है, बट मोलर वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑल ऑफ अस, एंड आवर्स वर द फर्स्ट बैच टू गिव DADH का प्रैक्टिकल एग्जाम. So we were all shocked, but the teachers were like कि अरे कोई बात नहीं, your crown should anatomically look like molar, otherwise it's okay. मतलब कुछ भी बना लो लेकिन थोड़ा बहुत तो दिखना चाहिए. So teachers were very helpful. तो उस दिन पे आपके साथ कुछ भी हो सकता है, तो आप उस हिसाब से प्रिपेयर करके चलो अपने आप को, इफ़ यू आर इन फर्स्ट ईयर स्पेशली, बिकॉज फर्स्ट ईयर में सबसे ज़्यादा बच्चों को फेल करते हैं. आई थिंक मेरा ईयर वॉज दी ओनली ईयर जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को फेल किया था, नॉट ओनली इन प्रैक्टिकल्स बट इन थ्योरी ऑल्सो. सो 3 थिंग्स विच आई वॉन्ट यू टू नेवर फॉरगेट. A, focus on the past previous 10 years papers. B,
focus on your drawing and carving both, because this can fetch you marks. if you lose thoda sa bhi in theory, matlab if you score less in theory and practicals mein acha hai, then it can balance and you can score good. See, for physio biochem, focus on one subject इतने अच्छे से if you're studying from the very beginning, so that दूसरे पे थोड़ा compromise भी हो जाए तो भी कोई problem नहीं है. So these are the 3 tips that I wanted to give you for the first year. So in the next video I'm going to be talking about my second year, third year and final first. So thank you for watching this video.